Welcome back to Chasing the Target, moving towards the tournaments, the big leagues, the big places where you have to perform, not the bilaterals, the Asia Cup, then the World Cup. Asia Cup, थोड़े दिन दूर है, approximately 15 days, Mustafa, if I'm not wrong. 31st is when it starts in Lahore. And then we go to India, Pakistan, baby. That's going to be interesting to see. Back with Mustafa after a long time. I think काफी time हो गया भाई को देख के, भाई के गुलाबी शर्ट, गुलाबी आंखें देख के काफी time हो गया. But yeah, it's been a decent break, I think, for इवन क्रिकेट इन जनरल. थोड़ा बहुत बारिश की वजह से टैम्पर हो रहा था बीच में. 100 ले लो आप, या कोई भी मैच चल रहा था. आई नो इंडिया आयरलैंड है अभी, आई थिंक 2 दिन में है, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं. बट एशिया कप, मुस्तफा, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रीलंका पाकिस्तान हाइब्रिड थ्योरी, पूरा ड्रामा हुआ. भाई हम नहीं खेलते, हम भी खेलेंगे, हम भी खिलाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, ये सब ड्रामा हुआ. फिर फाइनली कंक्लूजन आया, एटलीस्ट बेटर टेकन केयर ऑफ देन द वर्ल्ड कप. Yeah, I mean, at least World Cup का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन. भाई, it's going to be a mission. इंडिया पाकिस्तान मैच तो लोग बोल रहे, क्रिकेट इन्फो लोग बोल रहे भूल जाओ बोल के, like indirectly हमारे को बोल रहे, आर्टिकल्स लिख के बोल रहे कि it's going to be a logistical nightmare. So if that's the case, then it's going to be difficult for हम लोग आम आदमी जो है. But yeah, Asia Cup, I think that's where the focus will be, because we want to see how India is going to perform against, of course, Pakistan, against Sri Lanka, against Bangladesh. These teams will also compete in the World Cup as well. They will be strong. You're playing in Indian conditions. Sri Lanka and India, yeah, there's a bit of a difference, but it's still subcontinent. So, we'll find familiar pitches, familiar kind of conditions. So I'm really looking forward to it. I think it's a really good preview type of tournament, appetizer, and then we go into the main course. ट्रेलर है, फिर मेन मूवी तो वर्ल्ड कप ही रहेगी. बट इट्स लाइक अ ट्रेलर, अ टीजर भी नहीं बोल सकते, ट्रेलर थोड़ा बड़ा रहता टीजर से. बट या आई थिंक इट्स गोना बी, जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रैक्टिस चल रही है, श्रीलंका में, दे हैव अ बिट ऑफ एन एडवांटेज देयर एज वेल. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एलपीएल ले लो आप, या उसके बाद आप अफगानिस्तान में जो टूर्नामेंट के साथ जो सीरीज खेलने वाले वहीं खेलने वाले. सो आई थिंक दे गेटिंग अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यार, वो समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, कौन खेलने वाला है. वो कौन सा गेम, रूलेट बोलते हैं ना उसको, कि इसको लेना यार, डार्ट्स खेल के टीम सेलेक्ट होने वाली, समझ के बाहर है. ऐसा तैयारी देख, मेरे को तो सेमीफाइनल भी मुश्किल दिख रहा, बिकॉज अब नंबर 4 पे अगर आप रोहित को या विराट कोहली को लेके आएंगे, दैट मींस यू आर डिस्टर्बिंग द होल थिंग. एंड दे हैव नॉट प्लेड एट नंबर 4 फॉर लाइक हाउ मेनी, दे हैव नेवर प्लेड. आई हैव नॉट सीन देम प्ले एट 4, like hardly seen them play at 4. So if you're going to do that just for the World Cup, an experiment in the Asia Cup and World Cup, then yeah, you're doomed for failure. So I just hope that they bring in whoever it is, Ishan Kishan, whatever, and go with the flow. Their best players should play in the best positions, and the people who are not available, replace them with Ishan Kishan, Sanju Samson, Surya Kumar, and hope they do their best, because otherwise you're doomed for failure, bro. It's going to be very difficult, Neto. Yeah, 100%. It is going to be difficult. It's not, and again, ऐसा नहीं है कि बेकार टीम खेल रहे. All good Asian teams are in this. Sri Lanka is coming from a decent, रिडेम्पशन बोल, आप कुछ भी बोलो ना, पहले बेकार हो रहे थे 2022 में. देन दे स्टार्टेड रेजिंग देयर बार ग्राफ अच्छा बढ़ रहा था उनका. ऑब्वियसली इंडिया से हारे, बट अगेन दे परफॉर्म्ड सेंसेशनल. शनाका का जो कमबैक सेंचुरी थी, आई थिंक वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस दैट ही हेल्प श्रीलंका विन. उसके बाद they're defending champions. It's a different format, and they're always good in tournaments. They're always good in like ICC रहने दो या एशिया कप रहने दो, some like these formats they're very good. तो श्रीलंका को बांग्लादेश जिस तरीके से ग्रो हो रही, भाई नेक्स्ट लेवल टीम है ये. आई एम नॉट लाइंग, आई मीन we're going to go into the squad and देखेंगे कौन है कौन नहीं है. बट नेपाल जैसी जज्बाती टीम है जहाँ पे they have nothing to lose, just growth factor रहता, तो ये वाले भी टीम डर के रहना पड़ता कि भाई अपन तो एक we've topped the mountain, but people who are not knowing about the mountain, they sort of do क्या बोलते हैं, extra risk लेने को ना free रहते हैं बनस्बत like someone who's already topped the mountain, they can't. You remember in 2018 it was Hong Kong versus India, and Hong Kong were chasing 270, I think, and they're 170 for 0. And like it looked like India were gonna get knocked out in the group stages, but ekdam se Dhoni took over the captaincy from Rohit. He got the spinners in and they did the job. It was here in Dubai only, but वैसे teams, you're right, they can play with a bit less pressure and thoda sa they can put you in difficult situations. But again, it's 50 overs. I think India should be able to compete and do well. Hopefully, I think India is a better 50 over team than a T20 team. But again, the problem is availability of players. You're not sure who's going to bat in the middle order. Bowling ka bhi problem. अब देखना पड़ेगा. Jasprit Bumrah, all eyes will be on him Friday. Like in Ireland, he's the captain, and more importantly, we're going to see how he's bowling. Because it's not just fitness that I'm worried about. I'm form also, right? Like you can be 100% fit,
but you haven't bowled in an international game for 1 year. So how are you going to be bowling? What lines and lengths you're bowling? That's what I'm worried about. What about Rishabh Pant? I think we saw him also in the nets today, right? उन्हें भी थोड़ा बहुत I mean, that's bat. amazing news. You're gonna see him in the Yeah. IPL. I think IPL में आप उसको देख सकेंगे मेरे हिसाब से. लेकिन it's good, really good. I think वो तो positive ही है. Like अच्छा है वो खेल रहा है, and like finally we got to see him bat today. I'm really happy for him. But the other 2-3 guys, what I'm worried about is not their fitness. I'm worried about their form, their confidence, not playing for like 7 months, 8 months. Yeah. Year. आप आके कैसा खेलेंगे? शाहीन अफरीदी जब फुल टिल्ट पे डाल रहा है, राइट? इवन वी सॉ शाहीन अफरीदी लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप में आया था T20 में, फुल टिल्ट पे नहीं कर रहा था बॉलिंग. अगर कर रहा था पाकिस्तान probably better chance also to win that final. तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है जब बड़ी इंजरी से आ रहे, it's more your confidence, your form, rather than is he going to get injured again. I'm not too worried about that. I think that's a possibility too, but I'm more worried about उन्हें कैसा खेलने वाला है. Yeah, 100%. I think वो तो बिल्कुल सही बात है कि भाई उन्हें कैसा खेलने वाला है. मोर देन खेल तो लेगा, लेकिन कैसा खेलेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा, विल इट बी वर्थ गोइंग ओवर अदर प्लेयर जो आपकी अवेलेबिलिटी में है, जो रेगुलरिटी में खेल रहा है, राइट? नॉट समवन हु जस्ट पिक्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ अरे भाई इसको एक्सपीरियंस है, अरे भाई इनको आता खेलने. वैसे तो बहुत सारे लोग दिमाग में आ रहे हैं ना, आप जो लोग खेल के भी इंडिया का क्रिकेट छोड़ दिए. बट again, it's gonna be interesting to see कि भाई क्या अप्रोच लेने वाली in terms of squad India particularly. वो तो भाई it's become like a drama, right? Every Indian squad right now is a drama. World Cup ले लो, अब Asia Cup ले लो, मीर कब आने वाला है, तुलसी कौन आने वाले, वैसा सिचुएशन हो गया. Nitin Pasi is back. He's saying hello, I'm back. Pandya छपरी की छपरूगिरी निकल गई. पहले बोला था 5 ट्रॉफी वाले को देख लिया, अब 1 ट्रॉफी वाले को देखेंगे. I mean, देखो भाई, अगेन उसकी जो कैप्टनसी रही है, आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट इट. 5 टूर्नामेंट बैक टू बैक जीतने के बाद एक तो हारेंगे ऑब्वियसली, और साइड यंग है, चेंजेस काफी हुए. उसके जो इनिशियल स्क्वाड थी उससे तो काफी चेंजेस मिले उसको, एंड दे रोज टू द चैलेंज. आई थिंक 2-2 करना बड़ी बात थी. यस, ऑब्वियसली मिस्टेक्स बने. आई थिंक आई वुड से कि बैटिंग जिजर अच्छी कर सकते थे, नहीं करे एट टाइम्स. बॉलिंग थोड़ी रन ज्यादा लीक करी. एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक अक्षर पटेल, चाहल, इन लोगों को नहीं करना चाहिए. बट अगेन देयर नीड्स टू बी अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ी बैकिंग तो रहना, आई थिंक मेरे हिसाब से. Yeah, no, I know a lot of people are बहुत गुस्से में हार्दिक पांड्या को लेके, लेकिन yeah, for me it's just like give some time and see what happens. I'm not the biggest fan of him, but captaincy wise I'm okay with it. Let's give him some time and see. लोग गुस्से में आ रहे because he said कि it's okay to lose this and that. I'm okay with it, but I also feel that you should be okay with it. It's a young team, you're going to make mistakes. आगे जाके देखेंगे क्या होता. But yeah, I'm more interested to see how he's going to perform in the 50 over format with the ball and bat. Is he going to be fit enough, because he will be a key player for India going into 100%. He's going to be the main player because he's the only one who can bat and bowl, right? Like he's the only one who's going to give us that balance in the squad, or else we're going to be wrecked and we won't know actually what to do. हार्दिक पांड्या है भाई, अच्छा प्लेयर है, नो डाउट. उसकी कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन उसके कैपेबिलिटी की वजह से बने हुए अपने. एंड अगेन आप लोग उसको बेन स्टोक्स इन लोगों से कंपेयर कर रहे थे, बट आई थिंक अभी लोगों को समझ में आ गया है कि बेन स्टोक्स क्या चीज है और इनू क्या चीज है at this point. But I feel there is a redemption in him somewhere. He is wanting to come back in a very different avatar. He wants to do two things. He also wants to finish the games, also wants to hold the fort in the middle. Like he wants to carry the team when they're in a sort of a predicament, कुछ इशू में है, कहीं अटक गई टीम, कुछ ऐसे सिचुएशन में से भी उन्हें निकाल के गेम जिताना चाह रहा. So it's like वैसा भी है. He's trying to swim in two put his feet in two boats जैसा बोलते हैं. And I think it'll take time, but maybe I think he might be able मेरे को उसके बैटिंग से ज्यादा परेशानी है जो अप्रोच ले रहा है. he's trying to become like MS Dhoni and stuff. Just play how you play, man. You aggressive cricket एकदम से change क्यों कर रहे? Why you trying to be mature? Because the thing is, the team requires you to play that kind of cricket so that they excel and get to a competitive score, especially in the limited overs format. तो मेरे को वो उससे problem है more than anything else. The way he's approaching his batting, that is more worrisome. Because अगर उन्हें 5-6 पे खेल रहा, मेरे को वो हार्दिक पांड्या होना जो चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है इंडिया हार गए, मगर आके उन्हें फोड़ के रख दिया था, 3 छक्के मारा, इमाद वसीम को ये करा वो करा. That's the Pandya you want. I'm more worried about his approach as a batter and finisher rather than captaincy. I think captaincy he will learn, he will make mistakes. It's a young team, I'm okay with that. But उसका जो approach है batting wise for India, right? That's I'm more concerned about that. अब अगर एशिया कप पे फोकस करेंगे, व्हाट डू यू थिंक गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट सबसे स्ट्रांग टीम या सबसे किराक मौत डालने वाली टीम कौन सी दिख रही? वेरी ऑनेस्टली मेरे को तो पाकिस्तान दिख रही.
आई थिंक या पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी दिख रही है, मगर मैं लाइक इंडिया की भी लाइक अच्छी दिख रही है. द ओनली थिंग इज like bowling wise, but depends what they go with. But even if there's Shami and Siraj and no Bumrah, I'm still okay with that. I think spin wise India are good too. But balance अगर आप देखें, पाकिस्तान की balance बहुत अच्छी है, because उनके 3 स्पिनर बैटिंग भी करते, उनके पास ऑप्शंस बहुत थे. ऑलराउंडर भी फहीम अशरफ को भी इंक्लूड कर दिया शायद मेरे हिसाब से. So they have options. Like I don't know, it's been a bit controversial, but मेरे हिसाब से they have better balance. But again, 50 overs, this team I haven't seen them play consistently, right? Mostly मैं पाकिस्तान को T20 format में देख रहा हूँ, which is, I think if this was a T20 tournament, I would put Pakistan favorites. But still, if you look at this balance, I still like it compared to maybe in India. But India still do have players. They have Virat Kohli, Rohit Sharma. You've got Chahal, Kuldeep, Shami, Siraj. So I think you still keep India, Pakistan as favorites, but don't count out Bangladesh, Sri Lanka. Don't count out Afghanistan either. नहीं वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते. वो गलती टाइम जब भी करे आप देखो, मुंह की खाए अपन को. आप बांग्लादेश को अपन अंडर एस्टिमेट करे 2022 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, बारिश बचाई, लिटन दास रन आउट हुआ, बच गए इंडिया. तो आई थिंक वो सिचुएशंस में इंडिया नेवर शुड अंडर. एंड पाकिस्तान को अपन अंडर एस्टिमेट करे थे एशिया कप में, जहाँ पाकिस्तान फोड़ दिए थे अपने को. तो काफी टाइमों पे जब आप अंडर एस्टिमेट करते हो ऑपोजिशन को, आप थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड से खेलते. एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज को ही देख लो भाई, अभी रिसेंटली मैं वेस्ट इंडीज को भी हल्के में ले लिया, वेस्ट इंडीज फोड़ दिया आपकी. तो आई मीन इस हिसाब से आई थिंक दे शुड गेट एक्सपीरियंस कि हाँ भाई इसका तो नहीं. आप पाकिस्तान की स्क्वाड देखो, मुझसे अब्दुल्ला शफीक वेरी गुड फॉर्म, टेस्ट में ले लो आप. आई थिंक ही इज बीन सेंसेशनल इन द टेस्ट क्रिकेट. वनडे में उतना मैं नहीं देख, Fakhar Zaman, I think Fakhar Zaman is going to be one of the best players for Pakistan. Uska form is on point right now. He's been getting 95s and 50s. He's a very good, again left right का जो combination है वो मिलने वाला है उसको. And then चीफ सेलेक्टर के जो भतीजे हैं साहब, इमामुल हक साहब, उनको भी देखने में का मौका मिल सकता है. आई थिंक वो भी एक गुड ओपनिंग ऑप्शन है. इट्स गोना बी नाइस टू सी इफ ही इज एबल टू गेट. इमाम का प्रॉब्लम मेरे को यही दिखता है कि भाई ही इज नॉट एबल टू गेट, ही गेट्स ऑफ टू अ स्टार्ट बट ही इज नॉट एबल टू कैपिटलाइज इट. यू नो व्हाट आई मीन, ही इज नॉट एबल टू गेट बिग स्कोर्स. उनको थोड़ा technically he's good, but he plays the wrong shot at times. Ball kahin ja rahi hai, he goes across the line. वैसे kind of situation. Sri Lanka में भी he's made a 50 or 100, I think he made a 50 or 80, but he most of the time he was getting out to random deliveries. And then comes the bigger, like most runs scored, most centuries scored in 2023, 2022, Babar Azam. I'm not sure, but yeah, he's in great form. But he's in the form of his life. I mean, he's there in Sri Lanka right now. He's observing the condition in the LPL. Colombo Strikers की टीम आउट हो गई. हाँ, लास्ट टाइम भाई बैगन में मिल गए. तो तो कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे थे. आई मीन जो भी इट्स गुड ऑब्जर्वेशन उसके लिए. जाके पिच समझ गया उन्हें क्या चल रहा है श्रीलंका में, किधर टर्न हो रहा, किधर नहीं टर्न हो रहा. एंड इट्स अ गुड जो ड्राविड बोलते थे, देखो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाके 1 महीना पहले कैंप करके हम लोग पूरा समझ जाते थे कि कौन सी चीज कैसे होने वाली है. दैट्स व्हाट बाबर आजम हैज डन. दैट्स व्हाट नसीम शाह आल्सो हैज गॉन विद हिम. ही इज इन द सेम टीम एज वेल. देन सलमान अली आगा मुस्तफा, दिस गाय इज लाइक सेंसेशन. आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो इसके जो पार्टनरशिप रही है, he has been good with South Shakil and him have been a very revolution for Pakistan in test cricket for sure. ना वो फोर्ट होल्ड कर देते हैं और उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है. Yeah, exactly. And Salman Aga, I haven't seen him again in the one-day circuit as much, but what I've seen from the test circuit, man, he's really good with bat and ball. He's the fighter, especially with the bat. I was very surprised with the partnership that he put in Sri Lanka. So he's understands these conditions too, and that's the main thing. It provides more balance. Aapki batting depth, बढ़ती, फिर bowling पर extra option भी है. He can come in the middle overs, pick up a few wickets. It takes off pressure from the fast bowlers too. So I think he's a very good addition. Him, Iftikhar Ahmed, Shadab, and Nawaz. These are really great players to have in your squad, and you can potentially play all of them in your 11 too. And they're just in subcontinental conditions, it will give you the advantage, and it also gives you variation, because if the batsmen are getting used to Nawaz, or if there's two left-handers batting, you can easily give it to Salman Aga, and he can probably pick up a wicket too. So they have those options. And fast bowling to in log ki to best dikhti hai mere ko. Going into the Asia Cup, Pakistan ki, even if you have Bumrah, Shami and Siraj, it's a close matchup, but with Bumrah not being fit, Shami again, limited overs has a tendency to be expensive. Siraj is okay, he's in really good form, but if you compare it to Shaheen, Haris and what's his name, Naseem Shah, I think those guys, Pakistan's bowling lineup is fast bowling lineup in particular is the best going into the tournament. Yeah, then they have also Tayyab Tahir, जो addition अच्छा है. ACC में emerging cup जो था अभी, उसमें भी 100 मारा, 50s मारा. He was very good to see. उन्हें आके accelerate कर देता है बीच में. तो चाचू बोल तो Iftikhar Ahmed and other people in the middle, they'll be those accelerators. Aga Salman, South Shakil can be used that अरे भाई अगर बैगन में मिल गया, like अगर
wicket चले गए, then there'll be that controlling factor, I think. तो वो अच्छा है. South Shakil can accelerate as well on his will. उन्हें मारने निकला भी मार भी सकता. And like you said, Shadab Khan, Nawaz, Usama Mir also very good addition. He's a very good leg spinner. I think he's playing the LPL or the 100. I'm not sure. जहाँ पे 4 wickets pick करा उन्हें recently. The 100. The 100, right? He's playing, I think, in it's him, right? Manchester. I think he's playing Manchester in Manchester. में जो innings खेला था, जबरदस्त innings थी वो. Like he hit and like 4 that. wickets भी लिया था on the trot. So I think वो Usama Mir की addition बहुत अच्छी. Fahim Ashraf, yes, थोड़ा बहुत. He's not been in the best of forms with the bat, but all rounder it always helps. And he's got experience as well. मारने के टाइम पे मार भी देता. ये जो सॉरी इसका जो बोला था उसामा मीर का he's picked up some good wickets in the 100 but also like under pressure I saw him bat they were 80 for 6 or 80 he put on a partnership with Jamie Overton I think and it was like a 60-70 run partnership. It changed the whole game and Manchester won that game. So it just goes to show that these guys have really good flexible players man jo batting bowling dono karte hai and he's an addition to that. And Mohammad Haris also, I think you mentioned what's his name, Tayyib Tahir. He was the captain, I think, Mohammad Haris of that ACC team. So he's also an exciting prospect. Yeah, Mohammad Haris, Tayyib Tahir, kafi, they've got good exposure and whatever amount of time, at least all of their this 15 or 18 member squad, all of them have been playing consistent cricket. So that's what one positive for thing, and they've not probably played together. That's one area जो थोड़ा बहुत worrisome है. Yes, Test cricket खेले, but 50 ज़्यादा नहीं खेले, क्या बोलते हैं? तो 50 overs की cricket ज़्यादा नहीं खेलने की वजह थोड़ा chemistry का issue हो सकता है. And again, obviously we know पाकिस्तान में जो issues होते हैं in terms of team selection and then the politics and whatever not. But again, इंतज़ाम है वहाँ पे, chief selector हैं और कौन है? I think it's Hafiz. And one more, I think. So the thing is, like we say that Pakistan sometimes they don't have patience. Over 50 overs, they get exposed. When Test get exposed, but I think when you see in T20s, ulta bolte are Babar and Rizwan are too slow and everything. So we don't know. We'll have to see how they play. But I think whether it's T20 or 50, they still have a very good team. And how they perform, of course, that will be the big question. 50, how the fast bowlers bowl those 10 over spells rather than 4 over spells. How they utilize that. But I still feel that they should be all right going into the Asia Cup. Yeah, and then Wasim Jr. also a decent addition. He can bat a bit towards the end. I mean, they're not going to be picking him mostly maybe over Haris Rauf. I actually find Haris Rauf the weakest, amongst Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi and himself. I feel Haris thoda bahut, he leaks a lot of runs. In the recent times, मेरे हिसाब से he's got space, no doubt, but runs निकाले सकते. But वही है, उन्हें wicket taker है, right? अब उन्हें expensive भी है, तो like he's a wicket keeper. He gets that extra bounce. He can have spells where he changes the game. That's what you want from him. I don't mind if you if your bowler goes for runs, but if he's picking up the wicket of Virat Kohli, which he didn't in the last World Cup, मगर in my opinion कि Mitchell Starc के जैसा हम लोग बोल रहे थे कि he's expensive, but then he picks up important wickets. So I think Haris Rauf is that type of bowler. He's not as economical as Shaheen and Naseem, you're right, but he gives you that wicket-taking option. And of course, you have a good backup in Mohammad Wasim. Still, a lot of bowlers who've not been selected, man. Gekon Dahani hai or kitne ki aur bowlers hai. A lot of bowlers we saw in the PSL. So yeah, unfortunate. I think Fahim Ashraf, a lot of people will criticize that, but because he can bat and bowl, that's why he's probably in the squad again, giving more flexibility. Yeah, 100%. I think they also have Asian games too. There be, I think Pakistan ki team jayenge, so maybe these Dhani and all of these guys might go there, right? वो भी एक possibility है. So yeah, अभी तो पता नहीं क्या है उधर की टीम. खुशदिल शाह इन लोगों का तो जिक्र आया था मेरे हिसाब से. खुशदिल शाह and Azam Khan, all of these guys might get an opportunity to play, but we'll come to see. Now moving on to the other side of older Pakistan, जो East Pakistan था, Bangladesh. Moving to Bangladesh, these guys are going to be a threat, man. इनला जो recent time में cricket में अपने within themselves अगर revolution करे, I think I would say this is one very good team to see. Shakib Al Hasan को वापस ला लिया, obviously captaincy दे दिया, experience matter करता है. I think they respect that. Liton Das को दिए थे, but उतना effective नहीं था. इंग्लैंड को भी थोड़ा बहुत टक्कर दिए थे बांग्लादेश in March, but I don't feel like again Liton can hold the fort like a Shakib. When you go into a tournament, थोड़ा बहुत आपको एक authority figure होना, like a leadership figure जहाँ पे everybody आपको look up to करते, वो चीज नहीं दिखती मेरे को Liton में. Like Liton is more like a mellow and quiet kind of a guy. That's one thing. And then you've got Tanzil Tamim, Najmul Hassan Shanto, like Hussein Shanto, very good opener. He's got a couple of 100. I can't believe Shakib को captain बना दिया फिर से. Yeah, again it's just like his aura in Bangladesh cricket, bro. Like वो एक चीज है ना, like आप Bangladesh cricket का prime brand ambassador है उन्हें.
इसका लव हेट चल रहा है, लाइक कभी he gets banned, कभी he does something else, कभी ये होता, कभी वो होता. He's the most controversial player in Bangladesh, but he's also the best player. As captain, again, I have my questions, but it's fine. Like, he is experienced, like you said, he's a leader. They know, they played under him before. But yeah, like मेरे को तो अच्छा दिख रहा है ये squad. Ibadat Yeah. Hussain, Shariful, bowling भी अच्छी है. Yeah, Tanzir Tamim and I think a few others were picked from the ACC squad as well. And like Tauhid Hirdoi was another, main guy from the Bangladesh Premier League. जहाँ से then he got his opportunity. फिर England के against भी खेला उन्हें. तो तस्किन अहमद again very good fast bowler. We know what he's capable. Again उसका Yeah. injury issue रहता है थोड़ा बहुत. वो injury अगर संभल गई तो it'll be good to see him. Yeah, if Badat Hussain again another fast bowler like we know him. मुशफ़िक़ुर रहमान बीच में आके 100 मार देता कभी आके. मेहदी हसन मिराज तो सब कुछ पता है ऑब्वियसली जो इंडिया के अगेंस्ट हिला दिया था सबको अरे इंडिया के जबरदस्त है उन्हें, हाँ, स्पेशली ये कंडीशंस में तो उन्हें क्रेजी कर देंगे. श्रीलंका में, इंडिया में भी बॉल के साथ, बैट के साथ बहुत तगड़ा प्लेयर है उन्हें. इट्स गुड टू सी द फिज एज वेल. नो सनराइजर मुस्तफिजुर आई थिंक इकोनॉमिकल रह सकता बस उन्हें अगर उन्हें अपने पे आ गया टाइप से अगर उन्हें डालना शुरू कर दिया. आई थिंक बांग्लादेश इज अ वेरी गुड स्क्वाड इफ दे प्ले ऑन ऑल ऑफ देयर क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा फोकस करके वो खेले तो उनला कुछ और अच्छा उखाड़ मिक्सचर है, नहीं, यूथ और एक्सपीरियंस का. लाइक यू हैव साकिब अल हसन, रियली एक्सपीरियंस. यू हैव आपका मुस्तफिजुर, यू हैव मुशफिकुर रहीम, who's so experienced as well. But then Yeah. you have younger players too, like Mehdi Hassan, Sheikh Mehdi Hassan, Mahmood, all these guys, Shanto, Litin Das, they're younger, right? So I think it's a good balance. Yeah. उन्हें तमीम नहीं दिख रहा मेरे को, मगर he came out of retirement. तमीम इकबाल का आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा फोकस है बिकॉज आई डोंट नो उसको उन्हें रिटायरमेंट ले लिया था बट फिर प्राइम मिनिस्टर जाके बात करे तो उन्हें ओके बोला सॉरी बोला फिर आई डोंट नो अब क्या सीन है कि उसके साथ बट या आई मीन देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होने वाला अभी तो वेर वेटिंग. हाँ नो नेपाल की भी स्क्वाड अनाउंस हो गई थी बट वी विल बी कैप्चरिंग दैट अगेन दैट्स 6 टीम्स राइट सो देन वील हैव श्रीलंका नेपाल इंडिया एंड अफगानिस्तान एज वेल. सो अभी 4 टीम दो करके हम लोग निपटाएंगे ये एशिया कप के जितने भी स्क्वाड थे. बट अगेन इंग्लैंड का अच्छा तमीम हैड द बैक इंजरी बोले इब्राहिम भाई. So, yeah, but like again, one big news of the day was for Mustafa. The most happiest news was that Ben Stokes did get a text message from George Butler stating कि आप आ जाते क्या वर्ल्ड कप को जरा हमारे को मदद होना बोल के. What's your thoughts, man, on Ben Stokes probably playing the World Cup? Very mixed, because the person that has to be who's been sacrificed is Harry Brook, who I really wanted to see. He's my player, man. He's Sunriser, so it's a very mixed reaction now. Now I'm thinking about it. Like Ben Stokes already won the World Cup and stuff. Why did they have to axe Harry Brook for him? But man, Ben Stokes is a high quality player, all rounder. If I don't know when he's going to do his surgery, but if he can bowl in the World Cup, it'll be incredible. Otherwise, just watching him bat and field would also be nice. Lekin at the expense of Harry Brook, wo thoda sa mera dil dukh raha hai. I didn't expect that. Like, I didn't expect Harry Brook, who's been sensational. I know that IPL mein he didn't have the best of innings, and the World Cup is in India, so maybe that's what they're looking at. But I would still love to see Harry Brook. But yeah, Ben Stokes, high quality player, best all rounder in the world. You want to see him on any stage. Coming back, I think this is one last time. We saw Moeen Ali come back. England players do have this tendency of coming back out of the retirement. One last World Cup and then he's done. But I was very surprised because we were hearing that he's going into surgery. We saw in the Ashes he's playing on one leg. He couldn't bowl also. So I'm very surprised that he's in the squad. But yeah, I think he might have had it figured out. Yeah, I guess कुछ minor surgery होंगी जो हो भी गया होगा, मालूम भी नहीं हुआ कि भाई उन्हें सर्जरी करा बोल के. You never know. उन्हें छुपा रुस्तम आदमी है उन्हें बेन स्टोक्स अपने जबान में भूले तो कुछ भी कर देता है, ऐसी चीज है. तो you never know, उन्हें करके आके पूरा रिकवरेशन में है. केन विलियमसन का थोड़ा डॉजी है apparently. इसका अभी भी it's not he's not able to put a lot of weight on his leg. I think he did come to do a bit of nets in a few days ago, but अभी भी उसका कुछ confirmation तो नहीं है. But most likely he might not be able to participate because of the incident जो IPL में उन्होंने dive करने गए थे on the boundary for Gujarat Titans, but ruptured his ligament. तो केन विलियमसन का भी uncertainty है. अब ऋषभ पंत का एक interesting चीज अगर उनका सही हो गया will they take him? That will be the biggest question, man. If he's I don't think he'll be able to play because he just picked up the bat now. I don't think he'll be able to play. Anything is possible in India, man. Like, I don't know. If someone had a back injury, they're coming back in Ireland, and like
I don't know. I can't. But it's can't say. different. This guy had Yeah. a life-threatening accident, right? Like I understand, like maybe a year Rahul thing, but this is completely different. He couldn't walk properly, and like it was completely different. So I don't think there's no way. Like if like I think that would be the worst move if you put him in the World Cup. But the guy just survived, and then you want to play him in such a high intense competition. It doesn't make sense. बिल्कुल आई थिंक वो तो सही है अगेन अगर गॉड फॉरबिड इंजरियां हो गए ज्यादा फिर आई डोंट नो व्हाट दे आर गोना डू बट आई डोंट थिंक सो एज वेल मेरे हिसाब से आई थिंक अभी तो पॉसिबल नहीं है ऋषभ पंत का ईशान Then you किशन go वाज into डिसेंट मैन यू जस्ट you गो go विद into ईशान your reserves. You go into what's his name, Jaiswal. You go into what's his name, क्या है अपना तिलक वर्मा Tilak Verma and all these guys. You have to keep going into reserves. There's तिलक nothing you वर्मा can के तो तुम देख लो यार रोहित सितंबर तक आने वाला है आज उसको अंदर ले लेके आओ बोल के 100% मेरे को तो लग रहा है अगर आयरलैंड में परफॉर्म कर गया ना भाई उसको तो नंबर 4 का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई तिलक वर्मा को ला लो नहीं परफॉर्म करेगा तिलक वर्मा को एक्स कर देंगे do. Yeah. For 100%, like again, that's a controversial. It's going to be a debate because he's not experienced enough. He's not played enough games. He hasn't played 50 overs. I don't think I've seen him play 50 overs for India. So like it's going to be a high risk if they do that. But if they don't have a choice, you have to go with those players. If so for example, क्या सूर्य कुमार इंजर हो गया या कोई और इंजर हो गया सैमसन तो फिर आपको जाना पड़ेगा रिजर्व्स में बट मेरे हिसाब से सूर्य कुमार ईशान किशन और आप संजू सैमसन ये आपका मिडिल ऑर्डर होने वाला है होना चाहिए there's I don't know we'll watch it today Fez I didn't watch it yet but I heard and I read Ravi Shastri MSK Prasad and one more guy had they picked the Indian team and everything usme they select Rohit Sharma as number 4 batsman and I do not agree with that at all. याद है सचिन को खिलाए थे 99 में at number 4 that backfired. I would never mess around. Even in 2007 India messed around with their batting order. Sachin was batting in the middle order there too. It didn't work out. I will not mess with that. Rohit Sharma and Virat Kohli should play in their best positions. They should think मजबूरी में आप उन लोगों को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे उन लोग खेल लेंगे लेकिन you have to put your best player in the best position and then work around it in my opinion. बिल्कुल आई थिंक रोहित शर्मा खुद कंफर्टेबल नहीं था यार आईपीएल में भी एक बार नंबर 4 पे आके डक पे गया था तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा भाई कुछ पहले अटेंशन का इशू है अपने को जैसे मालूम टॉस में भूल जाते क्या करना तो आई थिंक अगर उनको फोर्थ भेजे भी तो गलती से ओपनिंग आ जाएंगे कोहली को भी लाइक उन्हें कोहली कर सकते 3 और 4 का उतना फर्क नहीं है मैं कोहली को भी नहीं हटाना मेरे लिए मोर देन रोहित शर्मा शुभमन गिल को भेज सकते हैं बिकॉज़ शुभमन गिल बचपन से वहां खेल रहा है उसको एक आइडिया है अब अगर आप दोनों को भी शॉर्ट नहीं चाह रहा अगर प्रोवाइडेड अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए मर रहे हैं अगर नहीं है तो फिर आप नहीं मर रहे तो फिर आई थिंक वही सूर्या कुमार मैं बोलता हूँ क्यों बिकॉज आप ये पिछला जो 3-4 साल है रोहित शर्मा ओपनिंग विराट कोहली सिंह है नंबर 3 वो नहीं छेड़ना है आप ईशान किशन आप उसको मिडिल ऑर्डर में रख सकते हैं he hasn't played in like crazy amount as opener or anything like that in the 50 overs so I would put him in the middle order or put somebody else there but continue with Rohit Sharma and Virat Kohli in the positions that's just my opinion. या 100% वो तो बिल्कुल सही है बिकॉज उन लोग वहां से भी कंट्रोल करके नंबर 4 तक नंबर 3 तक अगर उन इनिंग्स लंबा करना है तो कर भी सकते सो आई थिंक इट वोंट मेक अ डिफरेंस इफ दे कम ऑन नंबर 4 लाइक फॉर रोहित शर्मा इट विल बिकॉज उन्हें तो आउट ऑफ पोजीशन हो जाएंगे विराट कोहली के में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नंबर 3 नंबर 4 बिकॉज अगर एक विकेट जल्दी चली गई तो एक बॉल में आना ही है सो इट लाइक वैसा चलो समझ सकता हूं मैं बट अगेन they're just hyping up this thing मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सोच ले रहे भाई नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 या और उसमें आप पिंड में मिल जाएंगे आपका पूरा वर्ल्ड कप चलाता तो I wouldn't change it man let him bat at number 3 let him open the batting Rohit Sharma and continue with that ईशान किशन को खिलाना है तो उसको खिला लो 4 पे या आप किसी और को खिला लो बट इन लोगों को मत बदलो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बदलो और या आई थिंक या पाकिस्तान तो जिस तरीके से दिख रहा है लुक वेल वर्स्ट गोइंग इनटू द एशिया कप अब वही है कि केमिस्ट्री का इशू दिखेगा थोड़ा बहुत शायद क्योंकि जैसा मुस्तफा बोला ओडीआई ज्यादा खेले नहीं दे प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट टुगेदर आई मीन कैंप ज्यादातर साथ रही है प्रोबेबली बट अगेन इट्स जस्ट दैट फॉर्मेट ऑफ 50 ओवर्स थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट इसमें प्लेयर्स तो तगड़े हैं यार मिडिल ऑर्डर के आई थिंक बैलेंस वाइज जबरदस्त है टैलेंट वाइज जबरदस्त है मेरे 2-3 सवाल ये है कि एक आपका अब्दुल्ला शफीक दैट्स वन क्वेश्चन दैट आई हैव एक आई वुड हैव लाइक टू सी मे बी इमाद वसीम ओवर मोहम्मद नवाज बट आई नो बाबर इज अ बिग फैन ऑफ नवाज सो ओके फाइन दैट्स देयर मैच विनर है भाई Rizwan batting in the middle order. I have a question upon that. I haven't seen him regularly bat in the middle order. And again, the bowling.
10 overs versus to 4 overs, how they sustain that intensity. So those are the 3 questions I have. But if those get answered, then Pakistan have a very good chance. The conditions will help them. We know that they have talent both sides, batting, bowling. There are talented players. They're more experienced now than they were maybe 4 years ago in England. So yeah, looking forward to seeing how they perform. Maza to aayega. Yeah, 100%. And I think वही रुकना पड़ेगा I think till the end of the Ireland tournament to know India का क्या stand है in terms of Asia Cup. उसके लिए रुकना है. श्रीलंका की टीम अभी नहीं आई है, अफगानिस्तान की टीम भी नहीं आई, और अभी आई थिंक हाँ नेपाल की आ चुकी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी 3 टीम की आना बाकी है. तो या वी विल बी ब्रिंगिंग द लेटेस्ट फ्रॉम देयर एज वेल. ये तो एशिया कप का थोड़ा बहुत टच अपॉन करना है. एज वी गेट इनटू द टूर्नामेंट, टुवर्ड्स द टूर्नामेंट ज्यादा और डीप डाइव करेंगे. आयरलैंड का टूर्नामेंट है, इंडिया आयरलैंड, उसका भी स्क्वाड डिस्कशन करना है, उसके भी बारे में पूछताछ करना कि भाई कुछ निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला. आई थिंक इज दिस जस्ट प्योरली कि भाई बुमराह की फिटनेस टेस्ट करने के लिए. Obviously T20 है, आप रिस्पेक्ट करो opposition stuff like, but I think from India's point of view it's more like testing Bumrah's fitness than anything else. Yeah, exactly. Testing Bumrah's fitness, but also form, right? Length, line, pace, all that as well. I think he's fit, like he's bowling in the nets and everything, but line pakada, length pakada, how he's going to bowl in an actual match, the pressure mein hai, will he be able to bring that Yorker again? Speed kya hai uski? That's a very big question that I have. Will he be able to play at the same speed? If he bowls at the same intensity, will that sustain? Because we know with his action, Shoaib Akhtar has said it in the past, a lot of fast bowlers in the past have said it. I think Glenn McGrath also said it. Ki bhai, iska, he will be injury prone because of his awkward action. Now, that's what we have to see. Will he be able to sustain this fitness? And second of all, will he be able to come back and fire on all cylinders? And again, if he tries to tweak his run up, then it might be again adaptability. Again, Fez, ye 4 over dalne wala hai. That's still not going to be enough indicator for us. We have to see him again in the Australia series, then and the Asia Cup. We have to see him there. That is going to be his big test, bigger than the Ireland test. It will be this. This will just give us a small indicator, but then Asia Cup bowling 10 overs day in day out in those conditions in Sri Lanka, that will give us the indicator. Is he ready for the World Cup? बिल्कुल रेडी फॉर द वर्ल्ड कप. तो अभी तो रुकना ही पड़ेगा. अगेन एशिया कप इज देयर बिफोर द वर्ल्ड कप. आई थिंक दैट्स गोना बी अ ट्रेनिंग ग्राउंड. 10 ओवर्स डाल सकता नहीं डाल सकता, बिकॉज इसलिए हार्दिक पांड्या भी रहेगा ना टीम में, तो एक्स्ट्रा एक बॉलर बैकअप तो रहेगा. आई थिंक फॉर जसप्रीत बुमराह टू नॉट बोल 10 ओवर. अगेन हार्दिक पांड्या कौन सा 10 ओवर डालता भाई, उन्हें भी 7-8 ओवर का ही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम दिख रही है कमिंग फॉरवर्ड टू इट. बट अगेन आई थिंक कर लेगा. आई थिंक वो हिसाब से 1 साल से तो आई थिंक अगर but वही हार्दिक पांड्या like हम एक्सपेक्ट करते वो बुमराह we need him like if he is going to play. अगर उन्हें खेल रहा है 11 में, then you need him to bowl 10 overs. If he's not playing in the 11, ठीक है, आप उसको नहीं खिला रहे हर मैच, I understand. मगर जब मैच में खिला रहे, अगर उन्हें 7 ओवर डालेंगा और पूरा 10 नहीं डाल सकता, फिर क्या फायदा उसको वर्ल्ड कप लेके जाना, राइट? वो तो मेन है. हार्दिक पांड्या फिर भी आप कवर कर लेंगे अक्सर को ला लेके, उसको ला लेके, मगर उसको इसको कैसा कवर करेंगे आप 10 ओवर? वही आई थिंक ना आयरलैंड के बाद सीधा एशिया कप ही है, so you have not a lot of room. वही बेस्ट इंडिकेटर देंगे, because 50 ओवर अलग बॉल गेम, it's a different gravy bro. Like we know, I know it's just 30 overs more, but that's a big difference. Bowling 10 overs compared to 4 overs is a big difference. Ibrahim Bhai is asking, what are your thoughts on Brevis' inclusion in the preliminary squad for the World Cup? My thoughts or yes, your thoughts? Or our thoughts? Our thoughts. I'm extremely happy, man. I watched him since his first game in the Under-19 World Cup. I heard about him before that, but then I watched him since then. I love watching him bat. He's incredible talent, and to see him included is great, I think. And he's a brilliant talent. But they've also said that he probably might not make it to the World Cup squad, but they'll still see. This is just to ease him in, give him international experience, play the 50 overs. We might not see him in the World Cup squad itself, but only time will tell. I'm really excited to see how he performs. Like, I think they're playing Australia, right? That's who he's been announced for. So, मैं तो भाई excited हूँ. बहुत ज़बरदस्त talented player है. He does remind me of AB de Villiers. Although the coach said कि I don't call him AB, but I do, and I love watching him bat. Some of his stroke play is sensational. He's an exciting talent. The way he busted onto the IPL as well, the confidence which he started there in his first season, that was really remarkable too. So I'm really excited to watch Mr. Tewar Brevis. Yeah, it's going to be exciting. उन्हें क्या करने वाला है. I mean, we know what he's capable of doing. अब वही है कहीं ना कहीं he has to start, and I think it will be a good start in at least against Australia. काफी दूसरे भी player हैं. I think Donald Ferreira इनला है. I think
he has to obviously outperform everybody. Best player right now for South Africa only one guy, Hendrik Larsson. क्या बोलते मतलब? Yeah, man, पर incredible कल form. का भी जो हर जगह पिटता रहा है. the 100 का अगर कोई मैच नहीं देखे तो कल का मैच प्लीज देखो जाके. I think कैसा था वो लंदन डर्बी? that was a very good match to see. 6 which was saved, bro. Oh my god. 2 balls to go. I think it was 8 runs or 10 runs to 8 runs to win. 8 runs, yeah. छिक्का मारने के आया उन्होंने वाह क्या डाइव करके रोका यार. वो तो नेक्स्ट लेवल फील्डिंग थी, I think. But yeah, I think that pretty much wraps up things, and we'll be coming back tomorrow as well for Ireland and India's first game on the 18th. So we'll try and preview that tomorrow. And everyone else, yeah, till then please do like, subscribe and share. We will be getting more content from shorts and Asia Cup and Ireland, India कितने की जीला है और अभी और ज्यादा स्ट्रेस लेना है आगे जाके कौन खेलने वाला है. इंजरीज के बारे में दुआ करना है सबके हड्डियां मजबूत रहे, दूध पियो, सब अच्छा रहो. एंड yeah, we'll catch you guys very quickly soon again. Thank you so much, Mustafa, for joining me, and have a nice night.